मतलब वो सीएसके का मैच, मतलब जो बहुत देखना जरूरी था, वही टैक्टिकल मूव्स, वही चीजें जो हम ढूंढ रहे थे कि सीएसके करेगी आ, चिदम्बरम स्टेडियम में 11 अप्रैल को जो ये मैच हुआ है डीसी के अगेंस्ट। मुझे लगता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्टिकल डिसीजंस थे जो लिए गए सीएसके ने। जो जिस टेम्पलेट पे सीएसके बहुत सालों से खेलते आई है, जो टेम्पलेट उनका था कि यू हैव टू मेक अ रन, you have to give them a total, and then you do the right things at the right time during the second inning, which would let you take the win. तो आइए चलिए समझते हैं कि किस तरह से सीएसके ने इस पूरे मैच को बनाया और बनाया। मुझे जब I mean this was CSK's first win of IPL 26, and their first home victory at Chepauk after six successive defeats, which stretch backs to the previous season as well. They jumped to the ninth position on the table currently. I mean, Delhi Capitals, first match they slipped it from their mouth. Now the second match through a straight loss. Now the pitch was batting friendly, of course. Average first inning here is generally 165. I mean, historically at this venue, I know that the Chepauk Stadium has been changed over a period of time. So considering that, this score was good enough. I mean, मुझे एक जगह पे लगा कि अगर थोड़ा सा और पहले आयुष मात्रे को अगर रिटायर्ड आउट किया जा सकता था, तो वहां पे हो सकता था कि जो शिवम दुबे और ट्रेवर मतलब सरफराज खान आके और जो शिवम दुबे ने किया और जो डेवन ब्रेविस आके भी कर सकते थे, वो थोड़ी सी बात रह गई। पर फिर भी दिस वाज समथिंग विच सीएसके वांटेड इट। तो प्री मैच कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि यहाँ पे सीएसके kind of entered under the pressure. There was very poor power play strike rates. Gaikwad is among the slowest openers this season, and a 0-3 start. There were a lot of things that CSK wanted themselves to fit in. So they named an unchanged core 11 with Devil Brevis returning in, and I forgot the name, but it is I guess it is Gurjapneet Singh. He was playing for द फर्स्ट टाइम फॉर सीएसके, दैट वाज एन आईपीएल डेब्यू। और बड़ी रोचक कहानी है गुरजपनीत की, क्योंकि वो 17 साल की उम्र में तमिलनाडु आना, तमिलनाडु में फिर वापस से अपनी बॉलिंग को स्टैब्लिश करना, फिर वहां से लेफ्ट आर्म पेसर की तरह स्टैब्लिश करना, और उस एरिया, उस स्टेट में जहाँ पे जनरली हिस्टोरिकली उतने अच्छे मैं ये कहूँ कि बॉलर्स फ्रेंडली पिचेस नहीं है। I mean, of course, Venkateshwar Prasad, T. Natarajan, one of the finest bowlers have come from this area. But generally pitches जो हैं वो स्पिन फ्रेंडली होती हैं, और स्पिनर्स को ज़्यादा फायदा मिलता है यहाँ पे, इम्पैक्ट उनका ज़्यादा होता है। I feel that, DC made two changes that was uncalled for, because debutant Akif Nabi got for Viprash Nigam. Ashutosh Sharma came in later as an impact sub in the place of Nitish Rana, and they went with a right hand heavy top order and trusted their death bowlers, I guess Nigdi, Natarajan, and the Mukesh. So the decision at the toss was very nuanced, because Akshar opted to ball expecting that there would be a dew, and there would be a much more slower. The pitch will become slower in the second inning, but Chapok's surface rewarded the early aggression, and that was technically what Sanju Samson did. Like in the post-match interview, Samson said कि मैं बहुत confused था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रुक के खेलूं या there was certain doubts in terms of how he would approach his game. But then again, slowly the game progressed. He kind of knew what he wants and what he is trying to do, because the straight drive which he hit in the early of the innings, and then there was lofted shot over the covers. That was pretty much how Samson got into the mode, I guess. So Samson knew that there is a batting depth after him, because Matre, Dubey, Brevis was there. So they kind of wanted it to turn into 200 plus. Then DC started chasing explosively, but there was a collapse because what CSK template, and of course ये बहुत रोचक बात है जो हम बतानी चाहिए, कि अश्विन बहुत समय से और बहुत दिन से ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि जेमी ओवर्टन जैसे बॉलर को कोई जरूरत नहीं है कि आप उनको अंदेशा दें या संदेश भेजें कि आप आगे की तरफ बॉल करें। हिज पावर इन हिज बॉलिंग इज टू पुट द हार्ड लेंग्स वन बाय वन कमिंग एट इट। सो जो उनकी स्ट्रेंथ है उस पर अगर वो काम कर सके और उस पर पूरे तरीके से अपनी जद्दोजहद लगा सके, तो ऐसे बॉलर्स का जो टेम्पलेट होता है वो बहुत सीवियरली डैमेज कर देता है अगली टीम की पूरी स्ट्रक्चर को। और यही हुआ भी। पावर प्ले में से स्टार्ट करते हैं। सीएसके 61 पे 0 थी, मतलब दिस वाज द हाईएस्ट
of the match phase because Samson attacked from ball one. There was four of Nabi's second delivery and never, kind of he eased off 45 runs in the power play and then, nine into four balls in 19, nine fours in 19 ball faced. I mean, he kind of manipulated the fields very, very brilliantly. He knew where the fields are, and that is what is good about Samson. He's Rohit Sharma kind of a player that once he gets off, he knew that he can do something. He can do something which is very, very out of the world, because now that he once he gets on, he knew that the only thing that gets can get him out is that he himself do something wrong, which he of course did not. So he stepped out to the spinners. He used the crease very beautifully against the pacers. I mean, the length balls were punished as hard. So these were the three things that he was working, which was very basic to the batting. And अगर वो इतने पे ही ध्यान दिए, उसकी वजह से आप ये इनिंग का स्कोर देख रहे हैं. तो यानी सेंचुरी ऑफ, I mean, 52 balls, 100 runs, and I show four off to Natarajan in the 18th over. I mean, he finished with 115 of 57, 56 balls. I mean, his first IPL ton in CSK. So yeah, I mean, this was pretty good. And then finishing off with Matre, there was a 62-run opening stand. Then 113-run second wicket with Matre. I mean, there were extras, just three. So total boundaries were 21 fours and 9 sixes, and then of course CSK reached 50 in 5.1. So I mean, technically, I feel to understand the Delhi Capitals bowling, it was toothless. No bowler took more than one wicket. Natarajan leaked 54 runs. He was leaking all over the runs because आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये बैट्समैन ऐसे हैं जिनको अगर एक बार आपकी लेंथ पकड़ में आ गई ना, उनको एक हिंट मिल गया कि आप किस लेंथ पे हिट करने वाले हैं और वो वहां से अगर उठा के दे सकते हैं आपको, और एक दो बार दे चुके हैं, आपको बहुत ज़रूरी है वहां पे अपनी वेरिएशंस को चिप इन करने का, क्योंकि अगर आपने वहां पे वही पुराना टेम्पलेट और ऑटो पायलट मोड में अपनी बॉलिंग करना शुरू कर दी, then these batters are very, very fresh. They are coming from the World Cup. They know the template. They know how to, put you off to the guard. And that's what Sanju Samson did. मतलब अगर आप प्रथम निशंका को भी देखें, he is a dangerous opponent. He chipped to mid on for Kamjoj. Then KL Rahul came in. There was an explosive start, but again he caught at mid off. On Khalil's short ball. So technically even other collabs was there. Rizvi, फिर अक्षर आए, फिर मिलर. अक्षर पे तो क्या कमाल का कैच लिया था सरफराज खान ने, और मुझे लगता है कि गुरजपनीत की बॉल थी. Miller on 70 bowled to overturn Ashutosh again. He caught Kamboj off to the Noor. So lower order, Akib, Kuldeep, Nigdi, Natarajan. So they kind of folded very quickly. I mean, what was nice about CSK bowling was that they were trying to use the hard length very, very diligently. They were using their cross seamers very, very brilliantly, and the variations, of course, on a tacky surface, that jumped or slid. So there was no X factor spinner dominance that they Akil Hussain wanted in. क्योंकि उन्होंने अकील हुसैन को लाया ही इसीलिए था कि because they believed that Akil Hussain can bring that X factor in. But of course, Akil Hussain का बहुत पहला मैच है, and 2023 के बाद उन्होंने वो पहला मैच खेल रहे हैं. And as Ian Bishop also said in the commentary that it is the point to prove for Akil Hussain. But of course, there was fresh match start और nerves थे बहुत ज़्यादा. So I feel that Akil Hussain needs a lot of things other than what he's trying to do. He needs to stick to his line. बहुत बुरी चीज़ है अगर आप एज ए स्पिनर T20 में आप लगातार नो बॉल कर दे रहे हैं, यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ द क्रीज. दैट इज समथिंग टू बी ट्रेंड ऑफ. चेंज योर मार्क. आप बार बार नहीं कर सकते ये गलती. ये कमेंट्री में भी कही जा रही थी बात कि कम से कम आप थोड़ा पीछे होकर बॉलिंग करना शुरू करिए. अगर एक बार आपको ये अंदेशा या अंदाजा लग रहा है कि मैं स्टेप आउट कर जा रहा हूँ क्रीज से, तो अपना मार्क चेंज करिए. कम से कम डू समथिंग. यू कैन नॉट वर्क. जैसे मैं हर बारी मुझे उस टेम्पलेट से बहुत परेशानी होती है जहाँ पे आप T20 जैसे मैचेस में आप एक ही टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे अगर एक ही चीज़ से दिक्कत आ रही है तो मुझे टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक और दो बॉल में सारा का सारा गेम बदल जाता है. तो अगर आप अभी अपना टेम्पलेट नहीं चेंज करेंगे तो आपको टेक्निकली प्रॉब्लम ये होगा कि जब मैच प्रोसीड करेगी तो वो गलती फिर से आपको मार्जिन बहुत कम मिलते हैं. आपको वो एरर आपका छुप जाने के लिए, तो वो आपके छुपेंगे नहीं एरर्स. आपको कुछ और करना पड़ेगा. यू नीड टू बी ओवर स्मार्ट. यू नीड टू ट्राई टू थिंक कि मैं और क्या कर सकता हूँ. अब आते हैं what was the tactical and the strategic nuance that CSK did. I mean, today, like of course, CSK's captain was, I could see him in brilliant form, because
proactive bowling changes थे. He saved overturn and composed for middle and death overs. Then the impacts of bowling of Hussain targeted the right hand top order. So he rated, matlab, he knew when to rotate the pace, and he knew when to bring all my pacers in intelligently. So I mean, that was something to be proud of as a bowling effort. Akshar, I mean, bowlers restricted CSK reasonably to 215, 217, but fieldings were very, very bad. Samson was dropped at 52, and middle over execution let them down. So technically, post match, I feel that Aksar could have been proactive during his bowling time, and the bowlers also were working on autopilot. I feel they were not trying to do things again and again. Hard lengths were coming on the same spot. You were you were trying to make Sanju Samson comfortable with whatever you're bowling in. So वो उसको change करना पड़ेगा. I mean, CSK is off the mark. I mean, this was a big, big relief for the Gaikwad and Fleming. I mean, they are chipping in for the best times. I mean, Delhi Capitals must fix technically their middle order fragility, because next games will test if this CSK is turning point, or a kind of one off. So a clinical high tempo win for Super Kings built on one man brilliant and a bowling unit that refused to panic under such condition. तो मुझे लगता है कि that is something that has to be thinking of. मुझे अभी भी लगता है कि CSK एक जगह पे जहाँ गलती कर रही है वो अपने बैटिंग ऑर्डर में, कि that they are still trying to be very conservative with their lineup, because I just feel that सीएसके में वो सरफराज खान वाला काम जो है, जो सुरेश रैना करते थे एक समय पे, वो सरफराज खान इस समय इस बात को बखूबी से निभा सकते हैं. इफ आई फील दैट like how Shreyas Iyer is taking on Punjab Kings, that is the exact template that Gaikwad should follow. He should not be batting top at the order. He should come at number 4. Let your batting lineup start with Matre and Samson. Get them, go, tell them, go with the ball one. Matre has to not stand over there. He has to step out, try to click in over the 30-yard circle, try to make runs as how what Simran Singh is doing for Punjab Kings. You are not expected to make runs every day, but the day you are making it to make sure that your other batsmen who are coming after you should be convenient, should have a convenience over this cricket. उसके बाद मुझे लगता है कि उसके बाद अगर मैच अच्छा टेम्पलेट पे निकल चुका है तो लेट सरफराज खान चिप इन. सरफराज खान इज व्हाट सुरेश रैना was doing for CSK, और उनको वो टेम्पलेट समझाने की जरूरत नहीं है. बस आपको ये बोलने की जरूरत है कि आपको मैच का जो टेम्पो है वो गिरने नहीं देना है. लेट प्ले विथ डिपेंड्स अपॉन हु गेट्स आउट. ब्रिंग ब्रेविस एंड शुभम दुबे आफ्टर 13 ओवर तक ला ही दो भाई उन्हें, क्योंकि आप अगर इन्हें यहाँ पे नहीं ला रहे हैं, यू आर ऑलवेज कटिंग 20-30 रन शॉर्ट ऑफ ए टोटल स्कोर, एंड दैट इज what is very important. You have to get detached with your batting lineup. I saw that how Ayush Matre was sitting in the dugout. I mean, bro, you don't have to get worried. You did your job. You did the best what you could have done, and there is no point of getting sad. You were not retired out because of your inability. That was required for the match. और ये बात समझना बहुत जरूरी है बैट्समैन को भी, टीम को भी, और उस टीम के एनवायरनमेंट को भी. ये बात पेनिट्रेट करनी चाहिए कि आप अपने सिंगल इंडिविजुअल की बात है ही नहीं. इट इज़ नॉट अपॉन यू, इट इज़ अबाउट व्हाट हैज़ टू टीम, what team requires at that particular of time. जो भी टीम इस बात से डिटैच हो जाएगी कि मेरे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में ये क्या स्कोर क्रिएट होगा, या मुझे क्या क्रिएट करना है, या मेरी टेम्पलेट क्यों अगर ऐसी है, क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता. इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स जस्ट दैट ऑन दैट गिवन डे, ऑन दैट गिवन पोजीशन, someone else can give the fruits better than you. Your job was to give up fruit for a certain period of time, and you did it. You did your best. Now you don't have to get attached with this whole idea. So मुझे लगता है कि ये टेम्पलेट है और ये फॉलो होना चाहिए. You have to get attached with the standing in or letting the people, letting those batsmen getting score runs. जो जिस समय जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे उसको लाने का, उस समय रिटायर्ड आउट होने का ये टेम्पलेट फॉलो होना चाहिए. मैं कह रहा हूँ हर बार नहीं हो, कम से कम उस हर बार हो जब आपको एक टेम्पलेट दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे आगे अब स्लो हो रही है हमारी क्रिकेट, तो वहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत है. मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि हर बार करने की जरूरत है, पर जहाँ जहाँ आपको जब ये लग रहा है, यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट एक्सपेक्ट, और तभी आप वो स्कोर्स, वो चैनल, वो चीज़ गेस कर पाएंगे. सो for me, Samson, Matre would be opening one down, Sarfaraz, then let Gaikwad chip in if he really needs to, or
I mean, he needs to seriously work on his batting with respect to how hard lengths have to be played. He cannot take singles between the wicket. At least you can try putting an intent in that match. तो कम से कम वो चीज़ दिखेगी कि आप क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. When people see that there is no intent, then the frustration increases. So I see there is a lot of less intent in Gaikwad और उसको कम से कम बढ़ाने की कोशिश करें. And then we can see how Bravis and Shivam Dubey can be utilized at their best. I mean, these are the few things that CSK can do best, and I feel that this will be a very, very boost. The last match will be a very, very boost for them, and let's see how this whole tournament pans out after this match because they have got the crazy start, and let's see how the CSK get back to their rhythm. So yes, Yellow Thunder is back, and let's see how far it goes.